तो वित्त मंत्री ने पेश किया है अंतरिम बजट। बजट से जुड़ी सबसे पहले आपको बड़ी जानकारी दे दे, वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, गरीब, महिला, युवा और किसान पर फोकस है। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही 40,000, आपको बता दें 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत की तरह बदला जाएगा। ये तमाम घोषणाएं जो हैं वो की गई हैं। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया है। देखिए कैसा रहा ये बजट, किन किन क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहा। गरीब, महिला, युवा और किसान पर फोकस रहा। ज्ञान की बात की है, कहा जा सकता है बीजेपी सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब बजट के बाद अपना फर्स्ट रिएक्शन दिया तो कुछ बड़ी बातें उन्होंने गिनाई। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 2 करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य है। इसके साथ ही लखपति दीदी का उन्होंने जिक्र किया। आय के नए अवसर बनाने पर जोर है सरकार का। ये तमाम बातें कही गई हैं बजट में। और क्या कुछ खास रहा आपको सुनाते हैं। The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation as announced in my budget speech of 2021-22 to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honourable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Our government, under the leadership of Honourable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society and geographical inclusivity
through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once in a century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. तो वित्त मंत्री को आपने सुना, गरीब महिला, युवा और किसान पर फोकस, इन 4 वर्गों पर फोकस किया गया। परिवहन के क्षेत्र में घोषणाएं क्या हुई हैं? ब्लू इकोनॉमी 2.0 पर फोकस रहा। रेलवे में बनेंगे 3 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर। वंदे भारत स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होगी 40,000 सामान्य बोगियां रेल को लेकर, और हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हुई है। परिवहन के क्षेत्र में ये बड़ी घोषणाएं। टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा गया है। ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई गई है। ई वाहनों को, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिले। उम्मीदों पर भारी पड़ी परंपरा। आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली, इसलिए हम कह रहे हैं कि परंपरा जो है उम्मीदों पर भारी पड़ी। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। उम्मीदें हालांकि टैक्स पेयर को थोड़ी बहुत तो थी, इससे परंपरा के अनुसार करों में कोई बदलाव नहीं हुआ। टैक्स पेयर को निराशा हाथ लगी है थोड़ी। जिस रेट पर टैक्स दे रही हैं वही दर लागू रहेगी। वित्त मंत्री ने साफ कह दिया, 7 लाख की आय वालों को कोई कर देय नहीं है। देखिए, बदलाव नहीं आया कुछ भी। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए जरूर बढ़ा दी गई है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट बढ़ाई गई है। पर भी फोकस रहा, कहा वित्त मंत्री ने। तमाम पॉइंट्स